योगासन भारत, श्री राकेश कुमार शास्त्री जी। तो आप सबकी ओर से मैं आदरणीय राकेश कुमार शास्त्री जी का अभिवादन करना चाहूँगा, उनका स्वागत करना चाहूँगा आज के इस सत्र के लिए। और मैं अब उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा अपना विषय रखने के लिए। आदरणीय राकेश जी। आदरणीय राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार सर। मैं मेरे को एक बार ये अनम्यूट कर देना दूसरे मेरे नंबर। जी, अनम्यूट हैं आप, आपकी आवाज़ आ रही है। अभी एक बार बैठ जाएंगे सभी सीखे और जोड़ लेंगे आपके पास में। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। आज के सत्र के लिए मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। भाई रतीश जी, ट्रेजर योगासन भारत एवं समस्त यहाँ ट्रेनर प्रशिक्षक सभी को मेरा सभी को सादर प्रणाम। गुड इवनिंग। आज का विषय है आर्टिस्टिक सिंगल। मैं श्रेयस जी इसको शेयर कर दें पीडीपी को, तो मैं बोल दूंगा। Yes, I'm sharing the screen. Just a minute, I'm sharing the screen. मैं कुछ बातें रख रहा हूँ आर्टिस्टिक सिंगल के अंदर, आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ आर्टिस्टिक सिंगल आज। यह जो स्पर्धा है, मतलब आर्टिस्टिक सिंगल योगासन कंपटीशन जो है, योगासन स्पर्धा खेल बनाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य था योगासन भारत का। वह योगासन प्रतिस्पर्धी होने के कारण सभी आयु वर्ग के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से इसमें मदद मिल जाती है हमें, तो फिजिकली एंड मेंटली तो इस पर हेल्प मिलती है हमें। तो हमें ये प्रतियोगिता, इस खेल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक पुरुष वर्ग में, एक महिला वर्ग में। मैन वुमेन में हम इसको बांटते हैं, डिविजन होता है। तो कलात्मक योगासन जो है, आर्टिस्टिक योगासन जो है, वो शरीर की शक्ति, चपलता, आत्मविश्वास, लचीलापन, नियंत्रण, समन्वय और संतुलन शामिल है इसके अंदर सभी में। तो इस आर्टिस्टिक की योगासन सिंगल की एक अद्भुतता है। तो अलग अलग इसमें मिश्रण होते हैं। इसमें हम मिश्रण नहीं कर सकते जोड़ी के साथ, मतलब हम इसको पेयर के साथ नहीं कर सकते, केवल सिंगल ही कर सकते हैं, चाहे वो मैन में हो चाहे वो मैन में। तो ये आर्टिस्टिक योगासन है।
आर्टिस्टिक योगासन सिंगल के किए जाने वाले योगासनों में क्षमता जो संख्या है, जो लिमिट है हमारी आसनों की, वो है 10, मतलब 10 आसन हम इसमें करते हैं। परंतु दिए गए चार्ट के अनुसार ही हमारा जो योगासन भारत का जो चार्ट है, सीओपी है, अनुक्रमांक के अनुसार इसमें जो दिया गया है वही इसमें हम कर सकते हैं। श्याम जी इसको थोड़ा ऊपर कर देना इसको। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमें दिया गया है, तो इसके अंदर जो अवधि है हमारी, अवधि जो हमारी है, वो जो इसका समय लिमिटेशन है आर्टिस्ट योगासन का, वो है 150 से 180 सेकंड, अर्थात 30 मिनट, मतलब 3 मिनट जिसको बोलते हैं 3 मिनट का ये है आर्टिस्टिक योगासन सिंगल। तो इसका प्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं दौरान, जो प्रेजेंटेशन के दौरान एथलीट जो होता है वो प्रत्येक मुद्रा, मतलब एक प्रत्येक आसन को न्यूनतम 5 सेकेंड होल्ड करता है और उसको रुकना चाहिए। तो ये इसकी मिनिमम कैटेगरी है। तो आप इसके अंदर देखेंगे, इसे एक आसन से दूसरे आसन में जब हम जाते हैं तो उसमें हमारा जो कलात्मक है, मतलब आर्टिस्टिक जो एथलीट है, वो संगीत के साथ, जो उसका सॉन्ग है उसके साथ तालमेल, मतलब अर्थात लयबद्धता के साथ उसको करना अनिवार्य है। अर्थात उसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी संगीत की और उसकी जो चाल है वो एक साथ होनी चाहिए, समन्वय एक साथ होना चाहिए। ऐसे ही एथलीट जब हम प्रारूप में आते हैं तो हमें फर्स्ट टाइम आता है तो वो नमस्ते की मुद्रा बनाता है, लास्ट में भी वो नमस्ते करके जाता है स्टेज पर। तो ये हमारा एक प्रारूप है आर्टिस्टिक योगासन सिंगल्स का। तो इसमें अब जैसे छोटी छोटी बातें हमें, वो है कॉस्ट्यूम, मतलब ड्रेस हमारी क्या होनी चाहिए, वो भी इसमें वर्णन दिया, हमारे सीओपी के अंदर भी दिया गया है। तो उसमें भी हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेस का जो है हमारा वो बड़ा महत्व है। एथलेटिक्स ड्रेस को एक सभ्य और सुशील होनी चाहिए, ये हमारा एक पारंपरिक योग है। तो इसके अंदर हमें उसके विशेष हमें ध्यान रखना पड़ता है। वह सुंदर भी हो, कटी पटी ना हो, मतलब उसका पूरा सिलेक्स हो, हमारे शरीर पे कंफर्टेबल हो, और आसन की पूरी जो हमारी जो देखने की प्रक्रिया हो, जजेस को, डी जजेस को, तो वो क्या है कि लगभग कम से कम उसकी प्रॉपर तरीके से दिखाई दे, वह उसकी ऐसी ड्रेस होनी चाहिए। ड्रेस थीम के साथ भी हो सकती है, कॉस्ट्यूम जो है वो थीम के अनुसार भी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो न्यायाधीश मर जज है वो सही स्थिति उसकी देख सके, सही मूल्यांकन कर सके, उसका ऑब्जर्व कर सके उसको। तो ये ड्रेस का हमारा एक प्रारूप होना चाहिए। ऐसे ही हेयर स्टाइल उसके अंदर बताया गया हमारे में, हेयर स्टाइल भी हमारा ठीक ठाक होना चाहिए। और इस्तेमाल किए गए मेकअप जो होते हैं हमारे, अर्थात चेहरे पे मेकअप भी जो है वो थीम के अनुसार होना चाहिए। परंतु मेकअप के अंदर जो हमारा हम मेकअप करते हैं, किसी भी थीम के अनुसार मेकअप करें, किसी भी को रख के हम, यदि किसी को हम रखते हैं शिव तांडव के अनुसार करते हैं, या किसी को भी हम रख के, किसी भी पात्र को हम रख के यदि करते हैं, तो उसमें एथलेटिक्स का चेहरा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक मोटो है और इस पे पूरा तरह फोकस उसको एथलीट को करना पड़ेगा। तो उसी में हमें ड्रेस है, कुल संख्या जो ड्रेस की जो अंकों की बोले, हम मार्क्स की बोले कि उसको हम कितना मार्क्स देते हैं, तो वो 5 अंक हैं उसके ड्रेस के। तो ड्रेस के हमारे 5 अंक हैं। तो उसी में ड्रेस के निमंत्रण में मापदंड जो हमारे हैं, जो पूरा ना होने पर, जैसे ए जज है हमारा, तो ए जज क्या के द्वारा जो है 0.25 उसको पढ़ लेगा। जजेस का जो पैनल मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ मोटा मोटा, तो इसके बाद भी मैं पीडीपी के हिसाब से बता देंगे। मैं थोड़ा, क्योंकि उसमें 0.25 जो है वो मार्क्स उसके डिडक्ट कर दिए जाएंगे, मतलब काट दिए जाएंगे उसकी गुणवत्ता के आधार पर। अधिक से अधिक अंक, उसके 3 अंकों को भी कटौती की जा सकती है उसमें, ऐसा 3 मार्क्स तक भी कट सकते हैं। तो ये छोटा छोटा
मोटो था उसमें। ऐसे ही जैसे थीम, कैरेक्टर और एक्सप्रेशन, ये हमारे इसमें मुख्य है आर्टिस्टिक योगा सिंगल के अंदर। थीम, कैरेक्टर और एक्सप्रेशन, अर्थात जैसे मैं हिंदी में बोलूं तो विषय, चरित्र और आत्मविश्वास, ये जो चीज है ना वो समय अनुसार होती है। जैसे मैं कहूँ तो एक थीम का होना बहुत जरूरी है, इसमें थीम अनिवार्य है। प्रदर्शन करते समय, मतलब जब प्रेजेंटेशन एथलेटिक्स करता है तो समय खिलाड़ी को एक ऐसी थीम प्रस्तुत करनी है, जो प्रेजेंटेशन देनी है, जो गीत और संगीत की से मेल खाता हो, मतलब उसका सामंजस्य एक जैसा हो, उसके साथ मिला हुआ होना चाहिए, रिदम के साथ उसका मिला हुआ हो, संगीत के साथ, वो एथलेटिक्स का उसका। ऐसे संगीत का जो पात्र है, जैसे संगीत का किसी ने थीम ली और उस पात्रता के अनुसार जैसे हम बोले तो उसका भाव जो है वो उस पर होना, टिका रहना चाहिए। उसके भाव के अनुसार ही उसमें एथलीट्स को अपना वेश, मुख का भी, चेहरा का भी, कंधे का भी, इस सब का एक होना चाहिए। तो उसका एक्सपीरियंस भी, जैसे चेहरा सहित शरीर के पूरे अंग का, फेस, शोल्डर, मतलब शरीर का प्रत्येक अंग, मतलब जिसको बोले शरीर की बॉडी, संपूर्ण बॉडी को उसके अनुसार चलना चाहिए, समग्र भागीदारी उसकी होनी चाहिए, ऐसा हिंदी में बोलते, परंतु इंग्लिश में बोले तो उसका रोम रोम भी हमारा साथ साथ उसके चलना चाहिए। तो आर्टिस्टिक सिंगल के ये थीम के अनुसार होना चाहिए। इसमें हमारी कोमल हरकतें, जैसे किसी की भी बच्चे की कोमल हरकतें आ रही है या कोई गुस्से का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो उसमें क्या कोमलता की जो हरकतें होनी चाहिए, उसमें सामान्य से चंचलता के अनुसार बच्चे के रूप में, और उसका चरित्र पता चलना चाहिए। इसके अंदर सामान्य चीजें हैं, छोटी छोटी हैं ये। तो इन चीजों को, चेहरों के भाव भाव, संगीत पर सटीक प्रतिक्रिया, उसी टाइम एकदम जब दूसरे आसन से, एक आसन से दूसरे आसन पर जाता है तो उसकी मुद्राएं जो हैं वो भाव भंग नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके उसी अनुसार होनी चाहिए जो उसकी थीम है। थीम से हटकर उसको नहीं करना है इसके अंदर। तो उसी में मैंने बताया थीम के अनुसार भी नंबर कट जाते हैं, तो उसका भी एक प्रारूप सुगम होना चाहिए, सरल होना चाहिए। किसी भी प्रॉप्स जो अनुमति नहीं है उसके अंदर, प्रॉप्स संगीत को, वैसा संगीत को मतलब इसमें हमें अनुमति नहीं देते हैं। तो उसमें एक सभ्य सुशील संगीत होना चाहिए और थीम के अनुसार होना चाहिए। प्रॉप संगीत के लिए उसमें वर्जित है, और यदि एथलीट उसको करता है तो हमारे नियम अनुसार, हमारे सीओपी अनुसार उसको अयोग्य घोषित किया जाता है, उसको वर्जित किया जाता है, उसको मतलब वहां पर उसको अयोग्य घोषित हम कर देते हैं, एथलेटिक्स को हटा देते हैं। तो थीम जो हमारी है वो 2 अंकों की है। चरित्र जो है हमारा, करेक्टर है जो, वो 4 अंक का है। और जो हमारा एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, वो भी 4 अंक की है। तो ये हमारे अंकों का विभाजन किया गया है इसमें। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि थीम गाने में से मेल नहीं खा रही, संगीत से आपके मेल नहीं खाती है, तो फिर आपको 2.5 अंकों के से हिसाब से 1 से 2 अंक हम उसको काट लेते हैं लगभग। तो उसको डिडक्ट किया जाता है कि हमारा 1-2 अंक डिडक्ट कर देंगे, काट देंगे उसको प्रत्येक बार में। मतलब आप उसको, पात्र को खोने पर यदि दोबारा दोबारा यदि उस पात्र का उसमें नहीं मेल खा रहा, उसका एक्सप्रेस मेल नहीं खा रहा, उसका ये नहीं हो रहा, तो उसका संगीत के साथ हर प्रत्येक बार, हर आसन के बाद उसका जो थीम का होता है उसके बाद भी कटते हैं। तो उसकी जो हमारा जो लय है, चरित्र है, और उसमें हमारा संबंधित जो भी कुछ है, गतिविधियां जो है वो अनावश्यक नहीं होंगी, वो हमें अंकों के हिसाब से ही चलना पड़ता है उसके अंदर। तो उस अंक को हम उसी तरीके से डिडक्ट करते हैं। इसी में जैसे आर्टिस्टिक में जैसे चरण है आवंटित किए गए हैं, जैसे हम कुल संख्या जो है वो, कुल अंकों की जो संख्या वो 10 है, तो उसको भी हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है। मैं सामान्य तौर से बताऊं तो हमारे सीओपी के अनुसार जो चार्ट हैं, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, और इसी तरीके से हमारे ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग,
जो हमारा आसन है, तो वो इसी जैसे आपको दिखाएगा स्क्रीन पर, तो इसी तरीके से हमारे सीओपी के अंदर से प्रत्येक उस मास हमें एक एक आसन लेना अनिवार्य है। तो इन सब के अंदर से हम एक एक आसन हम चार्ट में से उठाएंगे, क्योंकि चार्ट के अनुसार ही हमें आसन करने हैं, और वो 10 के आसन हमारे वो है वो चार्ट के अनुसार ही होंगे। तो बैक बेंडिंग होगा, फॉरवर्ड बेंडिंग होगा, फ्लोर बेंडिंग, मतलब इसी तरीके से हमें 10 आसन इसमें चार्ट करने हैं, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से दूसरी जगह से हमें इसको नहीं उठाना है। और यदि हम एक ही, जैसे बैक बेंडिंग है और उसमें हम FBS है या FBF है, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, यदि हम उठाते हैं हम चार्ट को, तो फिर हम 2 आसन उठाते हैं, तो उसमें भी हम दूसरे आसन को मार्क्स 0 कर देते हैं। फर्स्ट आसन को देके दूसरे आसन का आपको आसन का जो है वो 0 मार्क्स मिलता है। तो इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा आर्टिस्टिक और सिंगल के अंदर, कि हमें अपने चार्ट से लेने हैं। प्रत्येक चार्ट के अनुसार हमें एक एक आसन, एक एक गणना, हर श्रेणी से, हर पात्रता से, जो बैक बेंडिंग को, चाहे वो फॉरवर्ड बेंडिंग की हो, वो लेग ट्विस्टिंग हो, चाहे वो बैलेंसिंग हो, तो उसमें से हमें एक एक आसन हमें सबको लेना है। तो प्रत्येक चरण में लेना है हमें। तो इसकी जो गति है, आत्मविश्वास है, कमी है, उसके भी हमारे नंबर कटते हैं। हम स्पष्ट बोले तो मतलब सामान्य तौर से कि भाई हमारे अंदर एक्सपीरियंस तो कमी आ रही है, और हमारी जो चाल है वो भी धीमी पड़ गई है। संगीत हमारा तेज चल रहा है, परंतु हमारी जो चाल है वो धीरे है। तो उसमें हमें उसको करना, उसके नंबर हमें काटने पड़ते हैं। तो इसकी गुणवत्ता भी उसी तरीके से 0.25 के हिसाब से ही है। तो आपको जो हमारी समय सीमा है इसमें, जैसे अब आगे नेक्स्ट आपकी समय सीमा है कि इसकी समय लिमिटेड क्या है, इसके टाइमिंग क्या है आर्टिस्ट सिंगल की। तो वो जो समय हमारा है, जो टाइम है, वो एक परफॉर्मेंस के लिए, एक व्यक्ति के लिए 3 मिनट है, मतलब 3 मिनट्स के लिए वो है। और अर्थात 180 सेकेंड, 180 सेकेंड्स का ये पीरियड रहता है। तो उसमें क्या है कि समय सीमा हमारी ये होगी। उसके बाद भी हमें क्या रखना है इसमें, कि संगीत जब स्टार्ट होता है तभी हमें वो सेकेंड हमारी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारा म्यूजिक बजा, उसी हिसाब से हमारी सेकंड भी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी प्रतिक्रिया उसी हिसाब से हो जाएगी, एथलेटिक्स उसी हिसाब से परफॉर्मेंस करेगा। समय की आवंटित कुल समय उसका 10 अंक है, समय का जो भी अंक है वो भी हमारा 10 है। अब इसमें 10 अंक होने के कारण 10 अंक हो गए, तो हमारे, तो इसमें क्या है कि इसमें भी हमारे विभाजन है, इसमें भी डिविजन है, इसमें भी 5-5 का है, 5-5 का है। तो 5 कैसे है कि 5 आसन हमारे आसनों के हैं, 5 नंबर्स, और 5 हमारे समय के। तो इसमें भी क्या है कि विभाजन दिया गया हमें, इस समय करते हैं कि यानी इनमें से 5 अंक पूरे प्रदर्शन समय पर रहेगा, पूरा जब तक वो परफॉर्मेंस दे रहा है तब तक उसके 5 अंक पूरे, उसके पूरे मिलते हैं। यानी उसको हम बोलते हैं TW, उसको जो हम बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं TW। और उसके लिए अन्य को बोलते हैं 5 जो अंक बच गए उसको हम बोलते हैं TA। तो इसमें हम डिवाइड करते हो 5 + 5 तो 10 हो जाता है। परंतु यदि हम अपनी प्रदर्शन के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, यदि परफॉर्मेंस दे रहा है, और फिर हमें शंकाएं होती हैं कि हमारे सीओपी में क्लियर लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उसको हमें मार्क्स किस तरीके से देने हैं, किस तरीके से हमारा डिविजन होना है। तो वो होता है हमारा 171 से 180 तक जो है, वो जो मार्क्स मिलते हैं वो 5 मिलते हैं, हमारे को 5 मार्क्स मिलते हैं। और 161 से 170 तक 4 मार्क्स मिलते हैं। इसी तरीके से 150 से हमारे को 160 तक 3 मार्क्स का। तो इस तरीके से हमने एक डिविजन बना का, उसका जो प्रारूप बनाया वो इस तरीके से ही है। तो वो आपको इसको फॉलो इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा, अपने एथलीट्स को भी इसी तरीके से सिखाना पड़ेगा, एथलीट्स को बताना भी उसी तरीके से पड़ेगा। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब यदि
180 सेकेंड, मतलब 180 सेकेंड पूरा करने के बाद भी यदि ड्यूरेशन आपका खत्म हो गया 180 का और एथलेटिक्स परफॉर्मेंस कर रहा है कंटिन्यू, तो उस समय पर सेकेंड 0.5 डिडक्ट होगा पर सेकेंड के हिसाब से। और 10 सेकेंड तक यदि वो करता रहा, 10 सेकेंड के बाद यदि वो करता है 10 सेकेंड के हिसाब से, तो उसको हम पूरा अयोग्य घोषित कर देते हैं, अर्थात उसको हम मानते नहीं है और वो फिर वो 0 पे चला जाता है। तो ये चीजें भी हमें नोट करनी पड़ेगी, अपने एथलीट्स को बताना पड़ेगा जब कोचिंग टाइम पे कि ये चीजें हमारे साथ होंगी। तो आपको उस टाइम तक आपको इन सेकेंडों का, मिनटों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये हमें उस एथलीट्स को सिखाना पड़ेगा। ऐसे एथलेटिक्स प्रत्येक आसन कम से कम, मतलब मिनिमम से मिनिमम हम बोलते तो शॉर्ट में हम बोले तो 5 सेकेंड होल्ड करना है वन आसन। यदि 0.5 मतलब 5 से भी सेकेंड से भी हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे तो 10 में चला जाएगा। तो इसी तरीके से हमें उसको 5 सेकेंड हमें होल्डिंग टाइम उसका रखना है। उससे यदि नीचे यदि 5 सेकेंड से होल्डिंग कम रहती है उसकी, तो फिर हम उसको शून्य मार्ग पे चला जाता हूँ। वो 6 पे जा सकता है, 6 सेकेंड रुक सकता है, 7 सेकेंड रुक सकता है, परंतु 5 से नीचे यदि रुकता है तो हम उसको मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं, उसके शून्य पे चला जाता है और वो 0 पे चला जाता है। तो इसको होल्डिंग जो टाइम है वो प्रत्येक आसन का 5 सेकेंड। इसी तरीके से हमें एथलीट्स को आसनों को कम से कम 5 सेकेंड तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, तो हमें उसको रोकना है। तो 0.5 + 10 करते हैं तो हमारा पूरा 5 अंक प्राप्त हो जाते हैं उसमें। तो हम इस तरीके से हम उसको यदि कैलकुलेशन करें तो 0.5 गुना हम उसको 10 से करते हैं तो उसका हमारा क्या होगा, हमारा 5 अंक हमें प्राप्त हो जाते हैं। जो जज हमारा है, जो है टी जज है या सामान्य जज है, वो कब स्थिति में रोकता है, आसन की स्थिति जब होल्ड हो जाती है तब हमारा समय काउंटिंग स्टार्ट होता है, और जब वो छोड़ता है तब उस पर खत्म। ये हमारा जज जो है वो, ये उनका काम जो है वो ये है कि वो एक टाइम में, टी जज जो है हमारा टाइम जज जो है, वो क्या करता है, उसके पास दोनों वॉच होती है, स्टॉप वॉच होगी तो उसके पास एक तो होती है TW की और एक होती है TA की, पूरे टाइम होल्डिंग की होगी, और प्रत्येक आसनों की भी उसके पास टाइम वॉच होती है। तो वो उसको नोट करता है और उसका कब होल्डिंग होती है, होल्डिंग तब होती है जब आपकी आसन की होल्डिंग और उसकी छोड़ने तक की होल्डिंग उसको रोकनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है, तभी हमारी उसकी काउंटिंग भी होती है। तो उसको स्थिति को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम आसन कर रहे होते हैं, बच्चा बोलता है, कोचेज भी बोलते हैं कि भाई ठीक है, हमारे बच्चे ने तो हमारे 10 सेकेंड रोके हैं, परंतु कब रोके करे हैं, तब रोके हैं या उसके टाइम पर रोका हुआ तब करा है। तो उसको हमें देखना है कि वो कब आसन पे गया, किस पोजीशन पे गया, किस पोजीशन से हमें रोकना है, रोक के फिर उसको हमें देखना कितने 5 सेकेंड रुका है, 3 सेकेंड रुका है, 4 सेकेंड रुका है या 6 सेकेंड। तो 5 से ऊपर तो कोई दिक्कत है नहीं, परंतु 5 से नीचे तो हमें दिक्कत आती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही चार्ट में है तो उसमें भी बताया मैंने आपको, प्रत्येक विकल्प है। योगासन जो चार्ट है वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो आसन का जो लिस्ट है, 10 आसनों की जो लिस्ट है, वो हमें सिर्फ अपने चार्ट से लेनी है, हमें COP से लेनी है, अनुक्रमक 01 से। तो उसी में से ही हमें करना है और उसी में से ही हमें दूसरा आसन नहीं करना है। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब हमें, मैं एक बार फिर आप जो PDP है श्रेयस जी, उसको भी मैंने तो जो बोला था वो एक बार PDP दिखा दूंगा शुरू से, तो उसके पे भी एक बार ब्रीफिंग कर देंगे। इसमें भी हमें, जैसे आप इस पे देख पा रहे होंगे PDP पे भी, कि आपको पूरा है, इसे योजना है, आसन के संगीत है, ताल बैठ ठीक है इसकी, वही जो चीजें मैंने बताई वही आपको इसमें करना है, म्यूजिक के साथ करना है। शारीरिक शक्ति होगी, मतलब
आपकी क्या क्या है, चपलता, लचीलापन, अनुग्रह, ये सब हमें इसमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। कुल 10 आसन है हमारे, करने होंगे सभी। इसकी श्रेणियां हैं, मतलब इसका उपक्रम है, वो इसी तरीके से हमें उसमें एक एक आसन लेना है। प्रत्येक मतलब सेकंड जो हमारी वो है 150 से 180 सेकंड तक हमारा 2.5 से 3 मिनट का जो हमारा समय है वो निश्चित है। तो इसी तरह प्रदर्शन की शुरुआत जो है वो नमस्ते से हमारी स्टार्ट होगी। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नमस्ते, और अंत भी नमस्ते से ही होगा, एंड भी हमारा नमस्ते से होगा। नेक्स्ट सर, ऊपर। Sir, I would like to take your 1 minute in between, and I would like to translate in English as well for some non-Hindi speaking persons, and as well as for some foreign delegates. This artistic single event is event in which asanas are performed in a synchronized manner with music, and it involves total 10 asanas. Athletes has to perform total 10 asanas covering 10 subcategories. What are the 10 subcategories? We'll see in next slide. The performance of athlete should be completed in 150 to 180 seconds. That is 2.5 minutes to 3 minutes. So performance should be below 3 minutes. And the performance, the start of the performance and ending of the performance should perform with a Namaste Mudra. Over to you, sir, for the next slide. नेक्स्ट भी है फॉरवर्ड बेंडिंग है, अपने आगे के झुकने वाले जो आसन है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंड फ्लोर है। तो इस मास में हमें आसन लेने हैं। और जैसे पीछे झुकने वाले बैक बेंडिंग है, बैक बेंडिंग फ्लोर है। तो इसी तरीके से ट्विस्टिंग बॉडी फॉरवर्ड है, ट्विस्टिंग बॉडी फ्लोर है। इसी तरीके से लेग बैलेंसिंग फॉरवर्ड, इसमें सब हमने एक एक आसन हमें सबको लेना है। 1 आसन हमें इसमें करना है। ये सब 10 आसन इसमें हमें लेने होंगे। नेक्स्ट स्क्रीन से। G. As we rightly saw in a previous slide, that athlete has to cover 10 sub asanas from 10 subcategories. The 10 subcategories are listed in front of you on the screen as forward bending standing, forward bending floor. There are 5 major categories: forward bending, backward bending, twisting, leg balance, and hand balance. And each major category consists of 2 subcategories. And the list of subcategories are as: in a backward bending, we have back bend standing and back bend floor. In the same manner, in the twisting, we have twisting body forward and twisting body backward. In leg balance, we have leg balance forward bend, leg balance backward bend, and hand balance forward bend and hand balance back bend. So these subcategories are denoted by their short names as FBS, FBF, BBS, BBF. These needs to be understood and need to be kept in mind for selecting of the asanas. So 10 asanas to be selected from these subcategories. There are total 10 subcategories. These are 10 subcategories. Each one asana from each subcategory to be selected so that 10 asanas are performed. Over to you, sir. नेक्स्ट, डी जज 100 मार्क्स, ए जज 40 मार्क्स, टी जज 10 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स। There are the artistic single performance is of total 150 marks,
and 150 marks are divided as 100 marks for the D judge, difficulty level judge, 40 marks are for artistic judge, which are known as A judge, and 10 marks are for time judge. So total will be of 150 marks performance, and depending upon the perfection and the performance presented, athlete will get marks. What are the further distribution? We'll see in next slide. आर्टिस्टिक सिंगल डी जज एक जज एक्सपेरिमेंट जी तो हमारा जो है अभिव्यक्ति है, तालमेल है, संगीत है, फर्श है का उपयोग करना है हमें, मतलब पूरे एपिक उसका भी करना है, हमें फर्श को भी इस्तेमाल करना है। ऐसे ही जांच पूर्ण हुई, प्रदर्शन समय होना चाहिए, प्रत्येक आसन का समय निर्धारित है, ये सब बताया गया है इसमें। तो एक बार श्रीनाथ जी आप भी इसको क्लियर कर दीजिए। जी, as we saw that we have total 150 marks, and out of 150 marks we saw there are 100 marks for the D judge. So D judge, how he gives the 100 marks, he will give 10 marks to each asana. Total how many asanas we want to perform? 10 asanas. So 10 marks for each performance equals to 100 marks for the D judge. And what the aspects will be checked by the D judge, as we rightly understood in a previous lecture on yesterday. According to micro marking system, D judge will give marks for each asana performed by the athlete, which consists of perfection of posture, mounting and dismounting of the posture, stresslessness, stability, grace, and presentation. Further, we have artistic judge aspects, in which artistic judge have total 40 marks, and the 40 marks is divided into major 5 parameters as costume, theme, character, expression, rhythm, music, use of floor, and artistic steps. And the last aspect is of time judge aspect, in which there are 2 sub aspects, each asana time and whole performance time. Each asana time means asana to be performed for 5 seconds at least, and whole performance time means the performance should be performed in between 150 to 180 seconds. डी जज मार्किंग सिस्टम एंड आसनास, तो इसमें है कि आपकी कॉस्ट्यूम 5 अंक, एक आसन की अंक प्रणाली जो हमारी है वो है आसन की जो एक्यूरेसी है जो वो होनी चाहिए हमारी 4 अंक की। अनुग्रह प्रस्तुति जो हमारी जो प्रस्तुति है उसकी जो है वो 1 अंक की होगी, और जो स्थिरता जो मैंने बताई थी, जो हमारा कंपन है, शरीर के बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो उसका वो जो हिसाब से हमें उस 2 मार्क्स होने चाहिए, और बढ़ने में और आसन का जो अंक है वो होना चाहिए 3 अंक का। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, इस आसन के अनुसार प्रत्येक आसन के हिसाब से मार्क्स डिवाइड किए गए हैं हमारे, तो 4, 1, 2 और 3 के हिसाब से। Ji. In a D judge aspects, as we rightly understood that each asana will be given 10 marks, but the 10 marks distribution will be as per the micro marking system, which we understood thoroughly yesterday. What are the major points which we understood yesterday is accuracy of posture, which consists of 4 marks. Then we have grace presentation, which consists of 1 mark, mounting and dismounting of the asana, which consists of 3 marks, and stability and stresslessness consists of 2 marks. So total 10 marks. So for each asana, we have
10 marks. So as for the performance given by the athlete, D judge will give marks out of 10. ए जज मार्क कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से होगी। आपकी जो कॉस्ट्यूम है वो 5 मार्क्स, और जो कलात्मक दृष्टि से जिसको हम बोलते हैं आर्टिस्टिक स्पेशलाइज जो कि वो 10 मार्क्स, थीम, कैरेक्टर और एक्सप्रेशन जो है वो 2, 4 और 4 मार्क्स के हैं। जैसे मैंने पहले बताया था 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स के हिसाब से। उसी तरीके से हमारा जो फ्लोर है, यस, जो फ्लोर है उसको हम यूज करते हैं, उसके हिसाब से उसके मार्क्स जो हैं वो 5 हैं। इसी तरीके से उसकी जो क्रमबद्धता जो है मार्क्स की, वो संगीत की जो है वो 3 मार्क्स है, और जो रिदमिक है वो 7 मार्क्स का है। तो इसी तरीके से हमें जो रिदम होगा उसको 7 मार्क्स का है, और म्यूजिक जो है वो 3 मार्क्स का है। तो ये प्रॉपर हमारा कैलकुलेशन है ए जज का, जो इसी तरीके से देखते हैं। G. As we saw that in A judge we have total 40 marks, and in that 40 marks there are different parameters that needs to be checked by artistic judge. In the whole performance given by the athlete, artistic judge check first of all the costume worn by the athlete. Then the next parameter comes theme, character, and expression. The presentation is depicting which theme is to be checked. Then whether the character performed is checked, whether the music is playing and the same character is being performed or not is being checked. And the part is next is expression. At the right place, the right expression is expressed or not is being checked by artistic judge. If say for example, if we have the sad expression in the song, then the sad expression should be depicted by athlete. If a joyful expression needs to be depicted in the song, then the same need to be depicted with his action. So this comes theme, character, and expression, which consists of 2 marks, 4 marks, and 4 marks. Next comes the rhythm and music. The music which the athlete selects for his performance, followed by his rhythm. Whether his performance is matching the rhythm of the music or not, and is he in the rhythmic performance, means whether he is performing very smoothly in a frequently and fluently matters. If he is taking a break in between, or mismatch of the rhythm or break of the rhythm, will affect the deduction of marks in the rhythm parameter. Next comes the use of floor. As we have 8 meter by 8 meter arena for performance of artistic single event. So athlete has to cover the complete arena. The maximum area covered by the athlete will fetch more marks for the use of floor parameter. Less arena covered will fetch less marks. And the last parameter we have the artistic step, in which when one asana is performed and the transition from the one asana to another asana is required, there is a requirement of artistic step. In a simple language, we can understand the dance step. So simply the dance step can be understood by the artistic step. How he is moving from one asana to another will be taken care by the parameter of artistic step of 10 marks. नेक्स्ट टी जज एक्सपर्ट जो है वो टी जज है, 10 मार्क्स है। टी ए 5 मार्क्स, टी डब्ल्यू 5 मार्क्स, जो मैंने पहले बताए थे आपको। जैसे F1 में 5 टी 0.5 मार्क्स हैं, उसी IF में 5 10 मार्क हैं, और जो टोटल 150 to 180 सिलेक्टेड है, उसी तरीके जैसे मैंने बताया, इसी तरीके से आपको इसमें डिवाइड कर देंगे
तो इसी तरीके से T1 में 5 और TW में 5 मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल टी जजेज का जो 10 मार्क्स है वो इस तरीके से डिवाइडेड होगा। और उसके बाद जो मैंने पहले बताया था, इसमें यदि हमें 180 के बाद यदि हम करते हैं इसको, तो फिर हमें उसका 1 पॉइंट के हिसाब से 0.5 के हिसाब से मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे उसमें। और 10 सेकंड के बाद उसे हम डिस्क्वालीफाई कर। जी, in time judge will assess the time factor of the performance. He will be having two stopwatches. One stopwatch will be used for calculating the whole performance time. Means when the music will start, the time judge will start the time. And when the completion of the performance of the 10 asanas completed, and when he moves the ending gesture, at that time, the time judge will stop his time. So whatever this time calculated or displayed on the stopwatch will be considered for his performance time, and it will be checked that whether it is in between 150 seconds to 180 seconds. And another parameter we have each asana type. As we saw that in Yogasana, each asana needs to be performed for at least 5 seconds. If athlete is holding the asanas less than 5 seconds, then that asana will be considered as invalid. If he is holding the asana more than 5 seconds, then only the asana will be considered as a valid. So such 10 valid asanas will fetch 5 marks. एथलेटिक्स योगासन जो है, आर्टिस्टिक योगासन सिंगल इवेंट जजेज पैनल जो है वो इस तरीके से रहेगा। 4D जजेज, 1 SM स्टेज मैनेजर, 2A जज, 1 चीफ जज, 1 SA और 2T जज होंगे और 1 एलिवेटर होगा एक। तो इस तरीके से हमारा टोटल ये 12 का होगा पैनल। टोटल 12 का पैनल हमारा होगा आर्टिस्टिक योगा सिंगल के अंदर, इवेंट के अंदर। Yeah. So artistic single judgment, it consists of total 12 judges. So 12 judges will sit in a panel to judge the complete artistic single performance, in which there is one chief judge who is the supervisor of all the judges in the panel, followed by 4 difficulty judges. As we rightly saw that each D judge consists of 10 marks, 100 marks. So we'll see that among 4D judges, whosoever judge is giving the more marks and whomsoever judge is giving the less marks will be deducted, and the average of 2 difficulty judge will be considered as the score of difficulty judge. Then there are 2 time judges to check the performance time and each asana time. Then we have 2 artistry judge who will check the performance as per the artistry parameter, as we just saw that costume, theme, character expression, and etc. These parameter will be checked by these 2 artistry judges, and the average of these 2 judges score will be checked. Then followed by 1 evaluator will be there who will be checking that whether the asana given by the athlete is correctly performed or not. Say for example, athlete is telling in the list that I will be performing Sarvangasana, I will be performing Shirshasana, then the evaluator will check that whether as per given order of sequence the athlete has performed or not. If not, then he will impose penalty. Then comes scorer and announcer. Is the scorer who will just have a keen watch on the scores given by the judges,
and he will do the calculation with the help of software. Then we have the stage manager who will manage the stage, means he will manage the FOP. He will make sure that all the athletes perform in a sequence and in a timely manner. He will be coordinating, he will be the bridge between athlete as well as the judges in the panel. Thank you, sir. सभी का थैंक यू, धन्यवाद। कोई कह इनको श्रेया जी कुछ पूछना है, कुछ बातें करनी है तो? सर कुछ डाउट्स वगैरह ले लेते हैं. Anyone having doubts can raise couple of doubts. We will be having one more session of our resource person. So only couple of doubts we will be having, and then we will move for the next session immediately. ठीक है, सभी को नमस्कार। Sir, there is one doubt from Subhash ji. आदरणीय जी प्रणाम, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। आदरणीय जी, ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो नमस्ते मुद्रा एंड में और स्टार्टिंग में होगी, उसका टाइम भी 180 सेकंड में काउंट करना है? नहीं नहीं, उसका काउंटिंग नहीं है उसका। जैसे म्यूजिक स्टार्ट हो गया और प्लेयर नमस्ते मुद्रा उसी में कर रहा है, तो फिर तो उसमें उसका यदि टाइम फिर म्यूजिक उसे आपने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया है तो फिर आपको काउंटिंग होगा। अच्छा, वहां से म्यूजिक स्टार्ट हुआ, टाइम स्टार्ट। हाँ जी सर जी। नमस्ते मुद्रा पहले कर सकता है वो म्यूजिक से हाँ, पहले? पहले कर सकता है वो बच्चा पहले कर सकता है, स्टेज पे आते ही कर सकता है। अच्छा, और बाद वाला भी म्यूजिक समाप्त होने के बाद कर सकता है? हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। म्यूजिक के बाद बीच में भी कर सकता हो, जब लास्ट उसका एंड हो रहा हो तब भी कर सकता हो। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Next, Deepak Jain ji. Hello sir, Namaste, Deepak Jain from Bhopal. I have one query about time, TW and TA. In TW, the time is, the marking is maximum the 5. Is the 150 to 180 all 5 or have a deduction from 5 to 4 to 3? ये जो हमारे कुल समय निर्धारित दिया गया है 150 से 180, ये क्या पूरा 5 अंक 150 से 180 तक दिया जाएगा, यथा हमारे पूर्ववत जो दिया गया था कि 180 से नीचे 150 से 160 170? जी धन्यवाद। आदरणीय जी, 170 से 180 तक के बीच में 5 अंक हैं। जी 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 सर, वो क्या अभी स्लाइड देखिए और सर। 160 से 170 तक 4 मार्क्स हैं, 150 से 160 तक 3 मार्क्स हैं। जी सर। और उसके बाद भी यदि कंपटीशन स्टार्ट रहता है और कंटिन्यू बच्चा कर रहा है 3 मिनट के बाद भी, 180 के बाद भी, तो 0.5 के हिसाब से उसका डिडक्ट करते चले जाएंगे पर जी सेकंड सर, के हिसाब यानी से। वही वही सर, एक बस निवेदन था कि अभी यानी जो सुना वो 150 से 180 हमारा पूर्ववत जो है वही है इसमें भी। धन्यवाद। थैंक यू। तिवारी जी। सर नमस्कार। ठीक है सर, श्रेयांश जी। सर नमस्कार, एक सर प्रश्न मेरा था। हाँ जी, हाँ सर बोलिए। सर पवन बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ सर बोलिए। एक म्यूजिक के जो 3 मार्क्स हैं इसमें, उसमें डिडक्शंस किस तरह से हो सकती हैं? लाइक म्यूजिक जो जो म्यूजिक जिस तरह के संगीत अलाउ नहीं है, वो तो उनका तो डिडक्शंस पता है। सपोज कोई संगीत, सबकी पसंद अलग अलग होती है, अगर कोई म्यूजिक पर्टिकुलर म्यूजिक मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रहा, तो क्या मैं उसको डिडक्शंस कर सकता हूँ? नहीं, जैसे हमें प्रॉप्स के लिए तो बिल्कुल अनुमति है ही नहीं हमारे को यहाँ। नहीं, प्रॉप्स की नहीं, मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। म्यूजिक में है, उसको हम करते ही हैं, उसमें डिडक्ट तो करते हैं जब हमें उसकी गुणवत्ता नहीं मिलेगी तो।
अच्छा, अगर पर्सनली मुझे कोई म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है तो मैं उसमें डिडक्शंस कर सकता हूँ इन द मल्टीपल्स आपको ऑफ म्यूजिक पसंद 0.5 आ रहा है, 0 आप पॉइंट। म्यूजिक नहीं पसंद आ रहा वो ठीक अलग है। परंतु अच्छा म्यूजिक है वो, मान लिया हमारा जो हमने लिखा उसके अनुसार यदि म्यूजिक है और वो हमें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा वो बाद की बातें हैं। परंतु हम उसको, उसकी यदि संगीत भी ठीक है और थीम भी उसकी ठीक है, उसके साथ चल रहा है वो, तो उसमें कैसे डिडक्ट करेंगे हम? ओके, ठीक है, यही जानना चाह रहा था। और दूसरा, जो TA का जो मार्क्स होते हैं 0.5 मार्क्स आपने हर एक आसन का बताया है, अगर वो 5 सेकंड होल्ड करता है तो अगर वो हम्म 5 सेकंड होल्ड नहीं करता है तो आपने बताया कि वो 0 हो जाएगा। तो हम्म। मतलब 0.5 मार्क्स जो मिलने थे केवल वही 0 होंगे, या पूरे आसन के जो भी नहीं नहीं नंबर नहीं, मिलने थे डी वो जज के भी वो सारे ईच 0? ईच आसन, प्रत्येक आसन नहीं में हर लगे। नहीं, हर आसन का तो ठीक है। अगर सपोज उस बच्चे ने कोई एक आसन 3 सेकंड में छोड़ दिया तो हम्म। उसका सिर्फ टाइम का नंबर 0 होगा, या आसन के नंबर भी जो डी जज देते हैं या जो ए जज वो देते हैं वो भी सब वो 0 जो होगा? आसन के देंगे वो डी जज अलग देंगे, और जो टाइम वाला है वो जीरो करेगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा फिर। ओके, तो मतलब सिर्फ टाइम का ही 0 होगा, बाकी नंबर हाँ, लगेंगे वो उस बच्चे के? जब टाइमिंग का जीरो होगा तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है वो, अच्छा, बाकी भी 0 सॉफ्टवेयर हो के जाएंगे? हिसाब से। हाँ। बाकी भी 0 है, ओके ठीक है, यही पूछा। ठीक, थैंक यू। Ji, thank you very much, sir, for your valuable guidance and for your patience to handle the questions. So, thank you very much once again from Yoga Yogasana and Yogasana Bharat. Thank you, sir. तो So सभी को now we नमस्कार, have शुभ रात्रि। our another resource person with us, Honorable Yash Parasharji, who will be taking our next session of rhythmic pair Yogasana event. We welcome you on this call, sir. Yash Parasharji is one of the technical committee member of Yogasana Bharat. We welcome you, sir. Please unmute yourself, sir. Namaste, Shreyash ji. Namaste, everyone. Shreyash ji, I'm audible now. Yes, sir, you are audible. We request you to please take up with our session. And there are some couple of doubts we will taking after this second session. Thank you. Okay. Thank you, Shreyash ji. Hello, everyone. First of all, I introduce myself. I'm Dr. Yash Parashar. I have the pride of being the three-time international Yogasana medalist player, technical committee member, Yogasana Bharat. Today is my session in musical event rhythmic Yogasana pair, Yogasana competition, in which two players playing in this event. And you know very well because Yogasana Sports is a very popular event. Recently, Ministry of Sports, Government of India recognized yoga in a priority sports, and the origin in a part of yoga and Yogasana sports in country of India. They all members, they proud, feel too proud, and especially in being a part of Indian. So every year celebrate International Day of Yoga, 21st of June. Recently came 10th International Day of Yoga. So it is very popular and it's very, uh, I think is a very good part we are playing for in section in your life. So in the vision of Yogasana Bharat, Asian Yogasana, and World Yogasana, the Yogasana is sports in recognized in Olympic Games also because that our country, our Yogasana Bharat, World Yogasana efforts, and
bidding of Olympic Games 2036. So two sports they have in our culture sports they have introduced in Olympic Games. So they all are risen to in that time India organized Olympic Games. So Yogasana is one of the best and very popular sports to playing in Olympic Games also. So it's very good efforts apart from our Secretary General Yogasana Bharat and World Yogasana Dr. Jaideep Padhya sir and our spiritual personality and the very famous personality in Yogasana, Shraddhe Shri Baba Ramdev Ji Maharaj. So they all members, technical committee members, players, technical officials, referees. So they promote Yogasana sports in different pockets and different societies and different countries also. And is one more two experience sharing in for my life. Second International Day of Yoga celebrate in 2016. I'm represent of Ministry of Ayush and the member of one group in Malaya University in Malaysia. So religion is a not part and barricading in yogasana and yoga in a part of religion. This is a part of day-to-day life. Yoga is the way of life. This is a very scientific proof that the yoga is the base of life. So I request to all, in behalf of you, those are to connect with your life. So to share one thing is regularly, please to start yoga in day-to-day life in busy schedule. So we are 15 minutes, 20 minutes, yeah, 30 minutes regularly start yoga session and yoga practice. So now about this event, rhythmic yogasana pair involves the physical strength and power, flexibility, grace, control, coordination, and balancing also. The rhythmic yogasana pair events will be separate for man and woman. Uh, Separately, the mixed pair is not allowed. So rhythmic yogasana pair has to following the categories. Rhythmic yogasana pair is two athletes performing same asana at the time, just like a mirror image is the simultaneously is a manner. I'm sharing one video also, so it's very easily to explain. They are start rhythmic yogasana and steps, action, artistic movement, rhythm with coordination with the rhythmic action and music. This synchronization performance. Two players they have built with proper rhythm and the synchronization is very smoothly and no fast action they have part they create very smoothly according to the music according your theme action and character we have to play is very important. So that's a very good and a very big uh, popular sports and very I think is fantastic performance and a very enjoying in a part. Those are to any person to first time see the yogasana uh, artistic pair and rhythmic pair performance. So he's very enjoying because every artistic step is few times to few seconds has change the artistic step and carry the posture with balancing strength and flexibility also get performing the players. So very beautiful the time this artistic and rhythmic performance playing. So all athletes and audience they enjoying this performance. So yogasana is a very popular sports in future and not only in our country in abroad and in globals in the world. So but they all are duties very must and responsible part for technical part
because otherwise we are not too sound free in techniques. So judgments and uh, what the performing, they all are performed well, but who's the best performance? So what is the criteria of the selection of the best? So they so many part of judgment criterias. First is theme, character, and expression. It's very important. Rhythmic costume for rhythmic yogasana, because costume is a represent of your theme. What kind of theme you select the theme. So first, your costume is represent your the theme, and music is part of your action. What you to player one and player two. So player one in which role has play in the performance, and player number two. So the music is a very good support in part of playing in rhythm and actions. So they some part of explanation of the costume, which types of costume is using in performance. Not transparent materials is not allowed, because they uh, in online, offline, that's those are to see the video. So is comfortable. Now there's not uncomfortable in the family members. They have also see the performance, but is not imbalanced. So is very presentation part of the cultural, because yoga is a culture of life. So this one first point, the costume that the players must be non-transparent. Then neckline, because especially women player athletes, so the proper round, full round neck costume is allowed. Otherwise, they have marks and deduction. They in condition of they have in explanation. Costume for both athletes in pair event should the same. No, the one player performing and selection of the black color costume, and one is white. Yeah, different colors of. So the same uh, colors and theme and the designing also. So this full marks. Otherwise, judges a deduction of marks in costume part. So the part of costume is full marks in 2 marks. We have in part of session we have explanation key how much time, total time of 3 minute 3 minutes to 2:30 to 3 minutes. They have total performing time, and 10 postures performing in rhythmic pair, and 10 artistic steps also they have part of your in the performance, in rhythmic performance. Uh, First, a posture as you're retaining, and you to perform in second posture. First to second performance between is to perform in artistic step also. Otherwise, every you're missing the every artistic step, so deduction of the 1 marks in your performance. So starting your performance in Namaste Mudra, the part of judo, karate, so the different types of body actions to be a start of performance. So in Yogasana, has both hands and both hand palm to be joined, and they has culture, and there is a very good representation of part of your devotion and divine in a part. Namaste Mudra joining and start the performance. Start the music. Your time is starting. So the rhythmic performance, the character of the music should be choose then is the respect of the age and technical level and artistic qualities of the player and each norms. So in a part of practical session, I'm sharing the one video. It's very good presentation part in rhythmic. It's very easily to explain, and you to very easily to feel and noted the technical points. And asana number one, in which types of asana they have athletes select. Asana number two, in which categories and which types of asanas. So easy, very easy to in you to see the video, and technically all points is clear. So first of all, and I request to
Mr. Suresh ji, please share the video recording as a part of Yes, sir. in the rhythmic musical. Yeah. Just sharing the video. Ji, please, may I request to full screen? Ji, please stop the video because we are explain about the video. The video is there is a rhythmic yogasana event. There are two players in this rhythmic video, in which player number one is wearing the blue band, and player number two is wearing a red band. So player number one and two wearing the red and blue bands. So this very easy to judges they player number one and player number two, and player number one is performing which types of asanas, and player number two this performance is not these types of asanas. So the difference is very clear. So carry the player one and two blue and red band, and you can see that the music start, both the players start the position and each step in taking action with the music in rhythmic. They all action with the rhythm, and the selection of the music, the chanting of Ram. So related to the Ram and which types of the life is presentation in the Lord Rama. So in the character is player, they're performing in this rhythmic with the carry the asanas. Yes, please start now. You see, the first posture is hand balancing. This is a hand balancing asana. This same angle to use of this asana number one, not is a mirror pose, not is a face to face they have connect and to perform. They one in FOP front of sides. So both player performing first posture in hand balancing one side. Yes. Please start the video again. The third posture in one leg balancing asana, a leg balancing posture, leg balancing forward, because they two types, the hand balancing forward and backward, and leg balancing forward and backward, twisting, floor. So these asanas is one leg balancing asana, leg balancing forward. Yes, please, Terry. Again, player perform leg balancing asana. Leg balancing asana. This is a leg balancing with back bending. This is a twisting asana that athletes perform, and every asana use the artistic step. This is forward bending asana performing, and every time the change of asana, retaining the posture, and before the second asana balancing and carry, we use artistic step. Please start, please.
In this video, before every asana, a player change the position with artistic step, and before coming into the posture of the next asana, the player change this position with an artistic step. So, because it's very important, every asana to be performed before artistic step is using. So, some points is very important point in part of rhythm and rhythmic yogasana competition in the part of judgments. So, what is the deduction of artistic judge in a multiple of 0.2.5 marks for not fulfilling in the criteria with the maximum of 2 marks in deduction in a costume. Every asanas, but the costume criteria is not filled in the take a final position. So your deduction is a 2.5 marks penalty. And in all 10 asanas, you not supporting in a part of costume is not too good. Selection of costume according to the posture, yogasana posture is not good. So multiple time to you deduction of penalty 0.25 all time. So, what is the theme, character, and an explanation? So, you see this video, the Lord Rama as they get in action. What your action in a part with your music, what your rhythm, and coordination with all two players. So, it's very important part with the all music event, not only rhythmic, in artistic pair, rhythmic, and artistic growth is very important because otherwise one player take the asana number one is good, but in a part of unit, so it's very important. Same time, same action with rhythm, with slow action, reaction. It's because uh, judges a totally set of mind. He that time the music in which word is playing. So what your action, what your reaction, what your is part of your rhythm in your performance. So is very important. So reaction is very important part for judging as duties and responsibility in artistic judge and judges a referee panel also. So deduction of a judge in multiple of 2.5 marks and not fulfilling criteria of maximum 3 marks of deduction in team character and explanation, maximum in 5 marks, total 5 marks. So rhythmic and music. So before this session, Rakesh Shastri sir also is the Vice President of Yogasana Bharat, is a very senior and very responsible person and very senior jury member also. In this session, asked one question. He said, the music is not good. And according to me, as a judges and judges responsibility, they asan is music is not good according to the performance, and that's verbal music it's using in a performance. So that's your duty and responsibility part as a judgment as judges. So your deduction of the marks in only music part, not in overall performance is affected with music, but in part of column in music, your deduction of multiple times of music marks is used at different verbal words using in a music. So, what are the major differences? Your any queries in a part of rhythmic session? So after they take my complete session, where all queries and questions. So rhythmic and music in a part of 10 marks in rhythmic events. So for missing of the rhythm in each time, deduction will be multiple of 0.25. And before
you see the video and I'm explain part of what is the importance part of rhythmic and music in playing in performance, because you have to see action and reaction, rhythmic part, and did you to selection of the music and what types of artistic step using in your performance. So they, you know, all part is very important, and there is a part of beauty also, because otherwise you to select of 10 different types of asanas and you to fastly action as to be uh, take the asan and retaining the postures, but you not to use any artistic step. So their performance is not beautiful. You see, is very boring of the performance. So this is very important. Key different of culture is music as you use and play, and your action and your part of totally devotee and this music and get you perform. And this is a very simple the take of portion and start of the performance, take the final portion and very smoothly retaining of this asana. So that types of is a very beautiful and part, and the full marks of the judges is giving for this types of performance. So what is the difference? Is because very simply and relaxing, calm is performed, no any reaction, aggression, and not extra pressure to carry in the part, because you to use the hand balancing asana, but your face is not normal. The aggression is part and tension you have to force us using. So that you're not normal in this position and they in asana, because the definition of asana is Sthiram Sukham asana. You're relaxed and then to be easily to complete your asana, holding your asana, your see and you to explain part of your strength in the posture. So it's very important. Deduction of 1 2 marks in volunteering of the above points is, so in part of synchronization is a very important, because you're using in one player is the right hand, so you part of action. So same time, same reaction in a part of player number two. There is coordination part and part of rhythm also. That it's rhythmic uh, steps and rhythmic with music. So it's very important the synchronization movement. So starting of any postures and beautiful part of structural formation, but use artistic steps very smooth and synchronization way. They player number one use the right hand of the take action. So player number two also use the right hand for this same action. Agar any posture, player number two use the left hand, so deduction in marks in artistic step, no marks in artistic according of that artistic step in 1 2 3. So suppose the artistic three step, one player use the right hand and second player use the left hand. So the synchronization is not matched. So that deduction of artistic step number 3. So is very important missing of synchronization each time with the lead of deduction of multiple deduction of mark 0.25 maximum up to 7 marks. Penalty of 1 marks will be and time body touch co-athletes, because in rhythmic no body touch. So in any asanas touching the body, leg palm they have carry in leg balancing asana, but uh, touch of player number two and player number one, yeah, co-athletes. So in one time of 1 marks penalty each time. So the time uh, 10 times of use and body touching in part of the competition. So all time 1 marks penalty is use the floor, because in rhythmic pair FOP, so 10 by 10 meter.
So 8 by 8 meter floor of artistic single, but artistic pair and rhythmic pair and artistic group event, the FOP areas of 10 by 10. The mattress has different colors. 8 by 8 box is different color, and 10 by 10 the marking of different colors. So they you to use all four corners because artistic judge sitting in the side corner in the front of sitting in at the panel. So all the different angle to use in your performance, all your 10 by 10 diameters they have using in a part of floor, use of floor. Uh, and you are to every time, any time to cross the line. So multiple time of penalty is reading. So the official floor are to be rhythmic yogasana pair 10 by 10. Athletes should use the maximum floor area allotted with the executing of the retaining, touching and crossing the transpassing of the line, border line. So the very important point that we have discussion in a part, touch and cross. According as me, I'm one athlete. I'm performing in the borderline, and I'm used, but my body is not to touch the cross the borderline and you touch the floor. But in my body is properly air cross the borderline, but on air, not after touching cross the borderline. So no deduction on a mark, but you to cross the line and touch your hands, your any body part, they have touching in cross the borderline. So penalty and deduction of the marks in the performance. And artistic step, because you know very well 10 asanas they select. So 10 artistic step performing in music. So artistic step are mandatory in the routine counting. Artistic step should be the continuous and the connected with the smooth section. Player can be use any classical, folk, and traditional steps, uh, and any aerobatic alignments other than front walkover, back over, cartwheel, front roll. They using, but proper with your line in apart is the proper of your performing in middle. Valid acrobatic alignments and for the movements from one place to another is to front walkover, back walkover, front cartwheel, front roll, and the back roll. Maximum of the each two can be used. So dance step, artistic step must be performed according to the tempo, rhythmic character of action of the music. So it's very important part uh, deduction, but though they raise of the penalty in artistic step of artistic judge, uh, you're taught to perform in your performance. You to perform 8 artistic steps. So 2 marks penalty. Artistic judge is cutting in your performance because you are two artistic step is not performance, not complete your 10 artistic step. So the 2 marks penalty is according to this condition. The time limit of rhythmic yogasana pair is maximum time of 3 minutes. After the 3 minutes, every 10 seconds, 1 second deduction of days of penalty 0.5 marks. And you to complete cross the time limit of 191. So your marks in whole time mark in 0, but timing of asanas because you have to all 10 postures carry with in timing of asanas, the timing of your performance unit part. So the 5 marks in time judge, time asanas judge. So not deduction, but in overall marking in a part. So one artistic
1 second to penalty is a 0.5 marks. So in whole time performance in you perform only 150 to 180, and all 10 seconds to be at every second you use cross that maximum time, so 0.5 marks penalty is raised. In time judge, they because in panel that's that very big responsibility part of time judge, D judge, because in D judge, so we judging in difficulty judge, artistic judge, they overall artistic step and costume, rhythmic, music, synchronization. But time judge, it's very big responsibility they playing in the performance, because every asanas, but that time to be a start of posture, and that time last player retaining the first time the asana is first. So they stop and note the times. So time of asanas and all of time. The two stopwatch using in both hands, one in whole time and one stopwatch every asanas. So this is very difficult, not easy, but the experience is part key. The player is not properly carry with the posture, so not to start. But take a final posture, start. You not see the stopwatch. You have to start. And first time, first player retaining the posture, that stop the play. So every time they hand is using offered time of asanas, and overall time, they your first time to start the music, you start the time, and last namaste, yeah, any posture, the reaction of part of closing, so they stop time. That's it. So that's duty of time judge, whole time of overall time and time of asanas, 5 marks, 10 times of time judge, and 2 time judge in the panel, T1, T2. So asana difficulty chart, because it's big confusion of artistic pair and rhythmic pair, because artistic pair, the pyramidal formation. So one player performing one two base of asanas to the use of baseline, and second player one time use the baseline. So not the condition is all 10 uh, asanas to select and perform all 10 different chart of asanas to be selection of the difficulty chart. But in artistic and rhythmic pair, because no pyramidal formation, because body touch is not allowed, so all 10 category, major category and subcategory, forward and balancing, forward and backward, both asana you have to select. Leg balancing, forward and backward, all category you to select in selection of the difficulty level of A, B, C, D, E category. So what your ability in a part in athletes. So selection of asanas of difficulty level D, yeah, E category. So, but in rhythmic, all 10 category and major category, in because the 5 types of asanas: hand balancing, leg balancing, twisting, forward and backward. So they all 5 categories into major and sub. So selection not missing of any category in your pair. You to select one two asan in only one category. One category you are still missing. So they every time they 2 marks category missing. Uh, sorry, 5 marks is category missing penalty, and synchronization change. That time you are to synchronize. So you to selection of 10 posture, asa number 1 hand balancing, asa number 2 leg balancing, asa number 3 twisting. But
you to asana number 1 and 2, they have interchange. So one time you to raise the penalty, but they assign you to perform in asana number 1 to asana number 2 and to asana number 2 asana number 1. So the two time of synchronization change, asana number 1 and asana number 2. So they have mark of penalty in only one time, not to two time, because they interchange asa number, but asa number 1, 2, 3. Asa number 1, 2, you performing asa number 3, asa number 2 performing asa number 1, and asa number 3, asa number performing 2. So they two time of changing, so they two time of uh, the synchronization time change. So every time the synchronization has changed, so 2 marks penalty. And category missing in major and subcategory both perform in rhythmic. So you have to not fulfill the criteria of any category or subcategory in your performance. So 5 marks penalty deduction in your category missing penalty, synchronization penalty every time, each time 2 marks, but only 3 time condition is allowed. Otherwise, due to 3 subcategory not perform, suppose that you're not performing one hand balancing asan, one leg balancing asan, yeah, you perform in 3 forward bending asan, so they are that only maximum 3 time category missing is allowed. 4 time you two category missing, so your disqualification. Overall performance is marked of 0 according to the condition. So in the explanation, the simple score of sheet available of this forward bending, standing and floor, back bending, standing and floor, twisting, forward bending and back bending, leg balancing forward and backward, hand balance forward and backward. But is very simple process to in the time you and take the responsibility as judges. So according the performance, any state of Uttar Pradesh of player performance and player number 1 and player number 2, yeah, unit 1 performing asanas number FBS, forward bending, standing. They is not missing. They is not performing. So, and DJ part, you two very shortly noted FBS not perform. So that time raise the question in review committee, yeah, that where performance according to the performance they raise of uh, review. So as part of my duty and responsibility, very easily to explain that candidate, you are in your performance, your position number, yeah, asa number 3 is not complete. Yeah, the in your performance, they part of missing. So it's very easy method to note very shortly in performance the asa number 1 was not performed, not balanced, and there's a time FBS, the first asan FBS, yeah, HBF, hand balance of forward. So it's very easy to explain in with front of chief judges, yeah, jury committee, review committee. They ask you what part of you to deduction in your as your duties. So you very easily to explain in your notepad is noted remarks in part. He and that in this performance artistic step is missing. That time the multiple 2 time or 3 time the deduction of part of costume marks because the costume in part is not good for particular the posture. So that types is very big duty and responsibility and a very easy to explanation part and very easy to be short of the any complaint and any
reaction in a part of protest. So, according to my experience, the all type of duties I'm in last uh, 20 years experience in yogasana sports, and especially music events. Uh, every time, and I'm very enjoying, and because maximum time I'm to be front of as a duty and responsibility part of musical panel. So it's very easy to explain, to shortly noted. They remark on part of the performance, and they anytime any question raised part of the jury committee and the chief judge. So very easy to explain. In the performance, the condition is that the front of side. So the see the video. So your remark is correct because you are to noted it. So you see you properly explanation part of the deduction of the mark. So nobody can raise the question for your quality and your ability, and that's part of duty and responsibility in the part of this event arena. Because otherwise, all time they raise one fingers front. That's part of your duty and responsibility. You're very sincerely and you're dedicatedly a devotee in part. We are to all duties is complete, but uh, the human error is the part he judges is not to completely fair judgment. They all time all referees unfair because then you are not to be favoring in part of self part, but uh, my side, my support, and my duty and responsibility clear. My points is direction of part because you are not complete according to the condition, according to the rule. You are not fulfill of this condition. So the deduction and the part raise the penalty. That's it. So is very easy and very simple method for any events, any types of duties and responsibility are taking as part as the judges. So uh, I think my explanation in part of uh, in rhythmic music, uh, it's because the time is very hot. I think 9:45. So, Shreshji, they how much time in my completion of my session? Thank you very much, sir, for your wonderful session. I would like to invite a couple of doubts those who are having, so that followed by that we can have their examination, so a small test. So Yes, can you please can have your doubts for 2 3 minutes? I think I think hand two hands is raised. yes, sir. Pawanji, your Sure. hand is raised. Thank you. Your session. Good evening, sir. Sir Pawan this side. Good evening. Yes, Mr. Uh, Pawan. Sir, my question is there any deduction for not doing Namaste gesture in starting and ending of the performance? No, but in part of overall performance, because your action and reaction in Namaste Mudra, because you have to start off your performance, but your reaction, starting of reaction. So they in all part, overall part, they have direction in part of the mark. Yes, complete. Means there are deductions for not doing Namaste. Yeah. But the video you showed us to you showed they did the Namaste gesture just after their perform after the completion of the performance and before the starting of music. So the Namaste gesture is out of their performance. So how can we do the deductions within their performance? Like that because the deduction in a part because the starting of your performance is Namaste Mudra is very clearly and explained those are to not perform starting of the Namaste Mudra. So they judges in especially artistic judge. So the deduction of multiple one time is that was 0.25 because it's very clearly in the instruction you're starting of your performance
So first to Namaste Mudra, because the action of yoga sports, yogasana culture is sports. So there is deduction of part of this So how much marks both will be counts. deducted? Deduction of in overall performance at a part we are facing, so is 0.25. That's it. No, it is 0.25. That means if he or she is not doing Namaste uh, uh, on the starting and at the ending also, so there will be deduction of 0.5 marks total. 0.25 yes. for starting, 0.25 for ending. Okay. And who will Yes. deduct it? The artistic judge. Artistic judge, because in only direction in a part of artistic judge, not in a D judge, because D judge have the only the complete of parameters of 10 marks. So they you not to perform at that. So D judge is not the part of the rights. Deduction is the part of but in the artistic judge is deduction. The And result of who will impose the penalty for doing mirror pose? sorry. Who will impose the penalty for doing mirror pose? The D judge Um, or A judge? no, artistic judge, not a D judge. A judge. All right. Yeah, Thank you. That's all. yeah. Thank you, Mr. Praman. Any Yeah. doubt we will be able to take as we have very shortage of time, and the request to ask question precise to the conceptual clarity only. Yes, Jyoti ji. Dr. Sheila Yadav from Delhi. Namaste, sir. Jyoti Sharma from Uttar Pradesh. Sir, I have a Yes, question. Namaste Jyoti ji. Yes, please. Sir, athletes are very much synchronized. Their asanas are same, like their alignment are same, but their Hmm. mounting and dismounting is different for an Mhm. asana. So, is there Yes. any deduction of marks? And if yes, how much marks we can deduct for it? Like, it's very clearly because you have to using of asana, because that's both player they're using of starting of posture and hand balancing maximum in a part of hand balancing asanas, the use of head in hand balancing Padambakasanas, just like the explanation part of Padambakasana, but either retaining simply down of the buttock of or touching of the floor. You not to use of retaining in part the same method of using. So they starting of marks 1 marks and the retaining also 1 marks. They start off the styles, but you are not to be following the rules. So 1 marks is deduction. So, This is if DJ part. not they are not synchronized with mounting and dismounting, because it's in some asanas athletes follow their own method in mounting and dismounting, right? So if they are Yes, not synchronized in that, then D judge will deduct 1 marks for that, right? yes. In because the not same mountaining or dismountaining. This style is different, so they 1 marks of deduction because only 2 marks allowed. So 1 marks is deduction. Okay, sir, one more question. If athletes perform two asanas simultaneously, like one after another without any artistic steps, Hmm. so how do they- In performance they because 1 time allowed because 1 time first at both in performance starting with artistic step and close also artistic step, so the 10 artistic step using in this types of condition. So in particular one condition asana number 4 and 5th, so we had simultaneously start, but 2 time is not be all 1 time in missing of artistic step, because in only so one sir this is condition is starting of artistic step and also the close of performance with artistic step, not asan. So in this condition 1 time you have to simultaneously performance 1 to 2 asan, but 2 time is not allowed, so one artistic step is missing, so the 1 marks is deduction. Yes. penalty for that if they repeat it second time? Yes, second time. First time is not, but
The condition is very clear. Starting of artistic step and close of artistic step, not only final posture, you are close the performance because you are one time art missing of artistic step. Otherwise, 1 marks is deduction because you are two one time simultaneously performance and not missing of artistic step. So what So, the condition of fulfilling of artistic step? so 1 marks deduction for not using artistic steps in between the asanas for the second time. Yes, yes, for the second time, not first time. First time is allowed only one time Okay. because the Thank is you, sir. fulfilling of all 10 artistic step is condition because more music of start, so they were to carry their action and they in artistic step and after complete of remountain of the 10th number of asanas and again they start of artistic steps, so they complete 10 artistic steps in this performance. So no deduction of the marks, particular of this condition. But uh, otherwise, you are not to fulfill of this types of condition and simultaneously one time to be using of the asanas 1 to 2. So 1 marks penalty because your one time artistic step is missing. Very clear. Yes. Thank Uh, Thank you very much, sir, for your valuable expertise and clearing the doubts in a very peaceful and very patient manner. However, express my inconvenience to other uh, hand raised persons because as the time is running, we need to conclude our session as also we have to conduct the exam. So I'm posting it the examination link on your chat box. You are requested to please take up the examination. The link is posted in Thank you, your Shreyashi. chat box. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, All are Shreyashi. requested to please give the examination in 10 to 15 minutes. Your time starts. Sir, link is not open. You can just refresh it. There might be some network congestion. You can just refresh it and you can just be able to open it. The link is provided in the chat box. Link is properly working. You are requested to check it again. The exam link is also been shared on the WhatsApp group.
Sabriji, the link is open and working properly. You are requested to check your internet. Last 3 minutes left. All are requested to submit earlier. Many of them have submitted. Very good.
Okay, last minute to go. The last 60 seconds. Okay, so time is up. Thank you very much, all the candidates, for joining and filling the examination. See you tomorrow at the same time. Thank you. Have a good night, good morning, good afternoon, as per your time zones. At some places there is a morning. At now here we have a good night over here. Thank you.